पूरे भारतीय आयुध शास्त्र के इतिहास में जो महाभारत में वर्णित सबसे बड़ा आयुध है वो पाशुपतास्त्र है। और उस आयुध की सिद्धि के लिए अर्जुन को यहीं आना पड़ा था, पूर्वोत्तर में उसकी साधना के लिए। तो पूर्वोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ के युवा उस दृष्टि से बहुत ही समृद्ध हैं कि वो इस क्षेत्र के हैं। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में बहुत सारे शब्द हैं। भारत क्या है, ज्ञान क्या है, परंपराएं क्या हैं, इन सबको जब समझेंगे तब भारतीय ज्ञान परंपरा को आप समझ पाएंगे। और अब उसका जो दूसरा हिस्सा है हमारे यहाँ का साइंस एम्बेडेड इन संस्कृत, तो इसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों से सब कुछ प्रारंभ होता है और वेदों से प्रारंभ होने की स्थिति में वेदों से ही सारी विद्याएं प्रारंभ हुई हैं, ये सबको ज्ञात है। और उनसे वेद जो है ज्ञान की एकता को स्थापित करते हैं, उसी से दूसरे शास्त्र निकलते हैं, वेदांत निकलते हैं, धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्मृतियां इत्यादि ये सब निकलती हैं। ये 20 स्लाइड्स हैं और समय थोड़ा कम है तो पास करते हैं जी। ब्रह्मांड की थियरी के बारे में जो बिग बैंग थियरी सबसे बड़ी इनकी थियरी मानी जाती है, ब्रह्मांड की थियरी के बारे में यहाँ भी जो वाक के सिद्धांत हैं, स्फोट के सिद्धांत हैं, शब्द ब्रह्म विवर्तवाद के सिद्धांत हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक जो खासकर हॉकिंग और आइंस्टीन के लेवल पर जो चीजें डेलिबरेट की जाती हैं, ब्लैक होल थियरीज, उनके बारे में हम उनसे आपस में उनको समझ सकते हैं। ये विभिन्न आचार्य हैं जो हमारी ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि हैं, आयुर्वेद में, राजशास्त्र में, शल्य चिकित्सा में, केमिस्ट्री में, इन सब में। और इन एटॉमिक थियरी है, एटॉमिक थियरी यहाँ पर वैशेषिक ने दी थी, कणाद ने। और एटॉमिक थियरी के जो आज के सबसे बड़े जो दो 20वीं शताब्दी के आचार्य हैं, आइंस्टीन और हॉकिंग, संयोग से 14 मार्च को उनका जन्मदिन होता है। और ये पाई डे भी मनाया जाता है 14 मार्च को भी कुछ दिन पहले। वो सारी चीजें पाई के बारे में भी यहाँ वो अभी आप देखेंगे स्लाइड में। और इन लोगों ने इन परमाणु सिद्धांतों को, यहाँ के दार्शनिक सिद्धांतों को, माध्यमिक सिद्धांत को, सापेक्षता सिद्धांत को अपने सिद्धांतों में या तो उनसे समानता की है, और आइंस्टीन ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा भी है कि उससे प्रभावित है। ये जो ज्योमेट्रिकल थियरीज हैं जो बाद में पाइथागोरस के बारे में बताई जाती रही है, वो पहले से ही यहाँ पर बहुत पहले का मतलब 1000 साल 1500 साल पहले ही बता दी गई थी। ये आकर्षण का सिद्धांत है। आकर्षण सिद्धांत का अभिप्राय है जो ग्रेविटेशनल, जो 2-3 सिद्धांत है फिजिक्स में इस समय, उनमें से एक है ग्रेविटेशनल पुल थ्योरी। कैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही जगह पर स्थित है, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड जो एक ही जगह पर स्थित है, इसके बारे में बहुत पहले यहाँ पर विचार किया गया था। और बिल्कुल उसी से मिलती जुलती चीजें जो है यहाँ पर आई है। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे इसी जगह पे बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज का जो विज्ञान है, विज्ञान को समझने की जो स्थिति है वो है, हम इंस्ट्रूमेंटेशन पे बहुत निर्भर हो गए, लेकिन ऑब्जर्वेशन अभी भी सबसे बड़ा तत्व है। न्यूटन ने भी वही किया था। आज के जो सबसे बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वीएस रामचंद्रन, जो टॉप 100 इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं दुनिया के, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के भारतीय हैं, वो भी अभी इसी पर काम कर, वो भी इसी पर फोकस करते हैं कि हमको जो है वो बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमको ऑब्जर्वेशन पर निर्भर होना चाहिए। ये पाई है, अभी पाई की चर्चा की थी। पाई का मान जो गणित के लोग, ये थोड़ा अरुचिकर हो सकता है क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड, जो लोग साइंस से रिलेटेड है वही इसको समझ पाएंगे। पाई का मान बहुत पहले ही यहाँ पर बता दिया गया था, निकाल दिया गया था। और ग्रहण के बारे में आप जानते हैं, पंचांग बहुत पुराने हैं, वैदिक काल से उनके आधार पर यहाँ काल गणना होती रही है। तो
जाहिर सी बात है वो यहाँ पर प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। आयुर्वेद आयुर्वेद के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जिनका मैंने चर्चा की, बीएस रामचंद्रन की। बीएस रामचंद्रन नोटेड टॉप मोस्ट न्यूरो साइंटिस्ट हैं इस समय दुनिया के, और उन्होंने फैंटम लिम्स पर बहुत गहरे रिसर्च किए हैं। वो जो न्यूरोबायोलॉजी है, न्यूरो मेडिसिन पर, और वो अपने पार्किंसंस के लिए और जो भी न्यूरोजेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इंडियन आयुर्वेद के साथ कोलैबोरेट कर रही है। इंडियन मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जो है आगे काम कर सकते हैं। इस पे जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि कैसे उन चीजों पर, उसका डेटा है, मगर मैं जल्दी में हूँ इसलिए यहाँ पर बता नहीं सकते सारी चीजें। लेकिन शल्य चिकित्सा इसमें जो है आगे नोज सर्जरी के बारे में कहा गया है, जो काफी पहले डिस्क्राइब था वहां पर, जैसे आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। वास्तुकला के बारे में तो कुछ आप जानते हैं कि वास्तु जो है स्पेस को मान करके, जिसके बारे में बता रहा है कैसे पूर्वोत्तर भारत महत्वपूर्ण है। तो ये तो बहुत सारे मंदिर हैं, देवालय हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्थापत्य हैं, तो उनको आप उसका महत्व बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों का प्रत्यक्ष ही है। ये पांडुलिपि एवं पुरालिपि विज्ञान है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी कैसे उन्होंने लिखना शुरू किया, क्यों नहीं लिखा। वेदों को कभी नहीं लिखा गया भारत में, विदेशियों ने ही वेदों को लिखा। तो वेद ही ऐसे एकमात्र ग्रंथ हैं जो श्रुति परंपरा है, और उसमें वेद ही एकमात्र ऐसे हैं जिनमें कोई इंटरपोलेशन नहीं है। बाकी सब में क्रेडिट करते हैं, रामायण कहते हैं शंभुपद प्रकरण घुसा दिया, ये कर दिया। तो ना लिखने का श्रुति परंपरा का भी अपना महत्व। और ये वास्तु है, और भारतीय जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि बाद में जब शंकराचार्य के बाद अभिनव गुप्त ने पूर्ववर्ती सारे दर्शनों को लेकर के काफी सिंथेसाइज किया पूरी दुनिया में, वो एक ऐसा उन्होंने दर्शन बॉडी दी जिससे किसी भी शास्त्र की, किसी भी विद्या का व्याख्यान किया जा सकता है, चाहे अनल हो सूफियों का और चाहे वेदांत का अहम ब्रह्मास्मि। इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो समय की थोड़ा ज्यादा है, ये बड़ा बनवाया था सर ने, तो इसको समय का अभाव देखते हुए अभी और 2 और वक्ता हैं, आपको दिग्दर्शन मात्र हो गया है। अगर कोई इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर और इन पर कोई मार्गदर्शन या सहयोग चाहता है तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय करता है। धन्यवाद। अभी मैं एक साधारण निवेदन करता हूँ, प्रोफेसर विजय कुमार करण वहीती से अपना वक्तव्य से हमें अनुरोध करें। नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वो भूतं यथा निद्रया यः साक्षिं कुरुते प्रबोध समये सुखात्मानमेवा तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये नमः। सभायै सभापतिभ्यश्च नमो नमः। मंचे आसीनाः एतस्य सारस्वत सत्रस्य अध्यक्षं नियुक्तः सेनापति महाशयाः, तत्रैव मंचे विराजमाना अस्मिता भगिनी महोदया, समक्षं राराजन्ते देशस्य कोणेभ्यः समागताः विद्वांसः प्रियांशः विद्यार्थिनः। राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है कि जिनमें बाकी ईमान अभी वे भटक रहे वीरानों में, दे रहे सत्य की जांच मरते दम तक रेगिस्तानों में। ज्ञानी वह जो हर कदम रखे बच के तब की चिंगारी में,
जिनको मस्तक का मोह नहीं उनकी गिनती नादानों में। जिनको अपने मस्तक का मोह नहीं होता, यानी अपने कुल परंपरा के गौरव का बोध नहीं होता, जिस मातृभूमि पर जन्म लिया है उसके प्रति स्वाभिमान का भाव नहीं होता, तो आत्माभिमान बेच करके कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति राष्ट्राभिमान नहीं खरीद सका। मैं इन्हीं बातों से उस दिनकर को स्मरण करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करने का प्रयत्न करूंगा। निर्धारित समय में मैं शब्द का विद्यार्थी हूं। शब्दों की तासीर, उसका मर्म, उसकी मारक क्षमता से परिचित होने के कारण जो उसकी नर्सरी है, उस शब्दबोध की जो विद्या है, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के साथ लगभग 15 वर्षों तक कार्य करते रहने के कारण थोड़ा सा उसका जो मैं आभास गुरुजनों की कृपा से पा पाया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के कारण वहाँ के गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर जो कुछ प्राप्त कर पाया, उन्हीं के श्रीमुख से बताई हुई बातों को आपके समक्ष रख करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय बंधुओं, ये पूर्वोत्तर का ज्ञानोत्सव है। पूर्व और उत्तर इस दोनों का संगम और ज्ञान का उत्सव, भारतीय ज्ञान परंपरा, ये सब एक जैसे ही शब्द पर्याय है। वैसे तो संस्कृत विद्या में कोई किसी का पर्याय नहीं होता। दारा का अलग अर्थ है, पत्नी का अलग अर्थ है, भार्या का अलग अर्थ है, भरण योग्या भारा होती है, बहुजनन संतति सुलभा स्त्री दारा होती है, पत्नाथ रक्षित पत्नी होती है। तो कोई किसी का पर्याय नहीं होता, लेकिन मोटी बुद्धि से जो विद्यार्थी विशेष करके बैठे हैं वो इसको पर्याय के रूप में समझ सकते हैं कि जो भारत है वही ज्ञान है। प्रकाश, भा का अर्थ प्रकाश का वहाँ जो इनलाइटमेंट है वो ज्ञान के चार्ज से है। क्योंकि मैं कहा कि शब्द का विद्यार्थी हूँ, CHARG, चार्ज, उसी चार्ज को एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यभार ग्रहण भी कहते हैं, उसी चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फिजिक्स में कहते हैं, उसी चार्ज को मार्केट में क्या चार्ज लोगे कहते हैं, उसी को पुलिस या लैंग्वेज में लाठी चार्ज कहते हैं, उसी को विधि में आरोप कहते हैं, उसी को चार्ज को मोबाइल चार्ज कहते हैं, और उसी चार्ज को हम आपका लेक्चर सुन के चार्ज हो गए। ये जो चार्ज होना है मित्र, व्यक्ति जब ओतप्रोत हो जाता है, आनंद उस गौतम बुद्ध के उद्बोधन से चार्ज हो जाते थे। मैं चूंकि नालंदा से आया हूँ, नालम ददाती थी नालंदा, 37 स्थानों पर नालंदा है। जो कोई नालंदा आया वहाँ विश्व का सबसे प्रथम व्यवस्थित विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा को ख्याति प्राप्त है, जहाँ पहला एंट्रेंस विश्व में हुआ प्रवेश परीक्षा, और वह प्रवेश परीक्षा कोई और नहीं लेता था, जो द्वार पुरोहित जिसका टेक्निकल नाम था, यानी MTS था, वह वहाँ का एंट्रेंस लेता था, और जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे देता था उसका प्रवेश हो जाता था, और जो उत्तर नहीं दे पाता था उसका प्रवेश नहीं होता था। वेनसांग जैसा व्यक्ति भी अनुत्तीर्ण होता है। वहीं पास के सूरजपुर के गांव में मोहन सिंह नाम के व्यक्ति के यहाँ 6 महीना रख करके प्रशिक्षण प्राप्त करता है, दोबारा द्वार पुरोहित के सामने आता है, उनके प्रश्नों को सुनता है, उत्तर देता है, 3 वर्षों तक अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त करता है, 2 वर्ष तक वहाँ अध्यापन करता है। ऐसे उस वेनसांग को भी जब उस प्रक्रिया से गुजरना होता है, इसलिए यह मान्यता है कि पूरे विश्व का सबसे प्रथम व्यवस्थित विश्वविद्यालय श्री नालंदा महाविहार था, जिसको फिर से 51 में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया। इसलिए उसका नाम, उसके पहले नव शब्द जुड़ गया, अब उसका नाम नव नालंदा महाविहार है, जो संस्कृति मंत्रालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आदरणीय मित्रों, वहाँ विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा में अधूरी चीज बताई गई थी, शायद इसलिए वहाँ बख्तियार खिलजी जैसे कुछ लोग आए और नष्ट करके चले गए। अहिंसा परमो धर्म बता दिया गया था, उसकी आधी लाइन नहीं बताई गई थी, सत्य हिंसा तथैव च। यदि सत्य की रक्षा करने की बात आ जाए, आपके आन मान शान की बात आ जाए, आपके कुल परंपरा के उस पर चोट करता हुआ कोई दिखाई दे, तो उस मार्ग के लिए आपको उस दूसरे मार्ग पर भी जाने के लिए शास्त्र अनुमति देता है। और इसीलिए इदम ब्राह्मणम इदम छात्रम शापादपि शरादपि अग्रतो सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरम धनु। यह जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, संक्षेप में मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। संयोग से भारतीय ज्ञान परंपरा पर ये एक विशेषांक हमने निकाला है। ये मेरे संपादकत्व में भारत देवरस सेवान्यास से एक प्रकल्प है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रमुख नगरों में इसका काम चलता है, वहीं से ये पत्रिका प्रकाशित होती है। मैं इसका संपादन का काम देखता हूँ। इस पर ही विशेषांक इसको मैंने तैयार किया है, इसलिए बहुत सारे
कहने को विषय मेरे पास है, लेकिन मैं अब समय की मर्यादा में आपको अपनी बातों को कह करके पूर्ण कर लूंगा। भारतीय ज्ञान परंपरा कब से इसका कहाँ उत्स है, यदि इस पर विचार करें तो जो विरासत की कड़ी में जो हमारा धरोहर है, हमारा न्यास है, यानी वेद भी एक विश्व के विरासत के रूप में यूनिसेफ के द्वारा जो विरासतों की सूची दी गई है, उसमें वह हमारा हेरिटेज है। तो कहते हैं कि सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन दुखम ही न्यासस्य रक्षणम, न्यास की रक्षा बड़े दुख से होती है, कठिनाई से होती है। यानी धरोहर को बचाना बहुत कठिन होता है, और प्रथम बार उस धरोहर को बचाने के लिए यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें प्रयत्न किया गया है। इसके पहले जो नीतियां होती थी शिक्षा से संबंधित, वो नई शिक्षा नीतियां होती थी जो कुछ दिनों के बाद पुरानी हो जाया करती थी। लेकिन यह प्रथम बार यह नई शिक्षा नीति न होकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्योंकि राष्ट्र के अब तक के जितने प्रॉब्लम्स थे, जिन समस्याओं को शिक्षा के टूल्स से दूर किया जा सकता था, उन सारे समस्याओं पर विचार करने का इसमें प्रयत्न किया गया। संयोग से उसमें भारत सरकार ने लोगों से पॉलिसी पेपर मांगे थे, सुझाव के लिए सजेशंस मांगे थे। मैंने भी एक सुझाव पत्र उसमें प्रस्तुत किया था पंडित मदन मोहन मालवीय की शिक्षा दर्शन के आधार पे, और 50,000 का कैश प्राइज मुझे प्रथम पुरस्कार उसके लिए भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारे लिए एक बिल्कुल ऐसा दस्तावेज है जो लगता है कि ये इसीलिए नवीन नहीं है, ये हमेशा नवीन ही, इसमें नवीनता ही दिखाई देगी। उसी उषा देवता की तरह जो न जाने कब से प्रकट हो रही है, और वो पूरा युक्ति कहलाती है। जो बुरी है वो युक्ति कैसे होगी, जो युक्ति है वो बुरी कैसे होगी, ये सामान्य लोगों के मन में कंट्राडिक्शन चल सकता है, लेकिन उषा देवता पूरा युक्ति है। जब जब हम उसको देखते हैं उसमें नयापन का, वो पुनर्नवा है, हमें उस नयापन का भाव बोध होता है। वैसे ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केजी से लेकर के पीजी तक और अनुसंधान करने वाले शिक्षक यानी समस्त शिक्षकों को विभाजित करके विचार नहीं किया गया है, और केवल एक किसी राज्य का, एक किसी समुदाय विशेष का विचार न करते हुए समग्रता में विचार करने के, टुकड़ों में बांटने की जगह, कपच्चियों में बांटने की जगह समग्रता में विचार करने का प्रयत्न किया गया है। लिंग, कास्ट, जाति भेद के ऊपर विचार न करके शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रकार के लोग इसके हो सकते हैं, उनको सबको एक जगह ला करके विचार किया गया है। इसलिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इसके जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है आत्मनिर्भर भारत की ओर। और चूंकि पहले का एक नारा था कमाने वाला खाएगा, लेकिन जो दिनों के दयालु थे, तर्क की बुद्धि को रखते थे, नियम पूर्वक अध्ययन किए हुए थे, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान से काम नहीं, तो रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई और दवाई, यानी ये 5 मूलभूत आवश्यकता है। और उसके ऊपर से स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की का जो स्पेस है, वह यदि व्यक्ति को मिल जाएगा तो अंत का उदय हो जाएगा। उस अंत के उदय होने के लिए प्रत्येक हाथों को काम चाहिए। इसलिए कमाने वाला खाएगा, यह जो नारा था उसको तिरस्कृत किया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आत्मा में। और जो जन्मा है सो खाएगा, तब तक खाएगा जब तक वह खिलाने लायक नहीं हो जाएगा, स्वयं खाने लायक नहीं हो जाएगा। तो कमाने वाला खाएगा, इस सिद्धांत को तिरस्कृत किया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। और आत्मनिर्भर की हुई जनसंख्या है, यह जनसंख्या बोझ रहेगी। यदि प्रत्येक हाथों को काम मिल जाएगा तो यह चुनौती अवसर के रूप में तब्दील हो जाएगा। और इसलिए दीनदयाल जी उपाध्याय, दरअसल मैंने उनके जीवन पर एक फिल्म बनाई है भारत सरकार के लिए, तो इसलिए उनके विचार बीच बीच में मेरे मनोमस्तिष्क में आ जाते हैं, मैं कैसे देख के नहीं बोल रहा हूँ, तो इसलिए आपके समक्ष रखता हूँ। तो दीनदयाल जी ने यह विचार किया कि प्रत्येक हाथ को काम, तो उनके उद्बोधन में वो कहते हैं शतहस्तेन समाहार सहस्रहस्तेन संकीर, 100 हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो। तो जब तक 100 हाथों से कमाने का सामर्थ्य नहीं होगा, तब तक हम जो जन्मा है वो खाएगा कैसे होगा, क्योंकि जो अभी काम करने योग्य नहीं है विद्यार्थी, आत्मनिर्भर अभी नहीं हो पाया है, उनके पोषण की व्यवस्था कमाने वालों को करना है। इसीलिए सैकड़ों हाथों से कमाना और हजारों हाथों से उसका वितरण करना। और धन की 3 गति हम शास्त्र के लोग कहते हैं कि दानम, भोग, तृतीया गति तो दासा। तो उस दोनों गति में ही उस धन की संपन्नता हो जाए। उस आत्मनिर्भर भारत को बनने के लिए
जो टूल्स है उसमें मुख्य रूप से शिक्षा है, और उस शिक्षा में जो आधुनिक शिक्षा है वह संयोग से पारंपरिक शिक्षा को जला करके उसकी राख पर भवन जो निर्माण होगा उस पर टिकी हुई है। और इसलिए कहीं ना कहीं हमें उस पारंपरिक शिक्षा की ओर फिर से रिविजिट करने की आवश्यकता है। और सैकड़ों हाथों को काम तभी मिल सकता है जब वही पुरानी लघु और कुटीर उद्योग, वही जो वोकेशनल जो हमारे शिक्षण है, और उसके साथ ही साथ जो हमारी कलाएं हैं, जो 64 कलाएं हैं, उन कलाओं की सृजनात्मकता का उनका जो शिक्षण है उसका प्रशिक्षण, ये दोनों जब हो जाएगा तो ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक हाथों को काम मिल जाएगा। और जब प्रत्येक हाथों को काम मिलेगा तो वह भी राष्ट्रीय आय की वृद्धि में अपना योगदान दे सकेगा, और वह खुशहाल होगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुशहाली के लिए कुछ सहायता कर पाएगा। ये जो चतुर्षष्ठी कला है, चूंकि समय मेरे पास कम है, मैं इस भावना को समझ रहा हूँ, तो मैं वहाँ केवल कुछ जो कलाएं हैं, जैसे एक कला है केश विन्यास की कला। इन चतुर्षष्ठी कला को एक बार मैं यहाँ चाहूंगा कि उसके नाम तो मैं गिना ही दो, चूंकि यहाँ विद्यार्थी हैं, केवल नाम सुनते होंगे कि 64 कलाएं हैं, आखिर कौन कौन सी हैं। कुछ इसमें परिवर्तन है, ललित विस्तर ग्रंथ में अलग है, कामसूत्र में अलग है। तो मैं कामसूत्र की जो कला सूची है उसको एक बार यहाँ, तो गीत है, वाद्य है, नृत्य है, आलेख है, आलेख माने पेंटिंग, विशेषक चेष्टा है, पुष्पास्तरण है, प्रसन्न संतरांग है, मणिभूमिका कर्म है, सैन रचना है, उदकावास है, उदकाघात है, चित्रास्वयोग है, नेपथ्य प्रयोग है, कर्णपत्र मुद्रा है, गंध मुक्ति है, भूषण योजना है, यंत्रजाल है, पौचमारस्व योग है, हस्तलाघव योग है, सूचिपान कर्मणि है, सूत्र क्रीड़ा है, बिना डमरू वाद्य के प्रहेलिका है, प्रतिमाला है, दुर्वाचक योग, पुस्तक वाचन, नाटकाख्यान का दर्शना, काव्य समस्या पूरण, पट्टिका वानित्र त्रिकल्पम, तक्ष कर्म, तक्षण, वास्तु विद्या, रूप वृक्षा, धातुवाद, मणिराग, कराकन, वृक्षा विवेद योग, उत्साधन, संवाहन, केशमर्दन। यह जो केश विन्यास के 116 प्रकार बताए गए हैं कि 116 तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने बालों को सुसज्जित कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी विद्या है ये, और इसके आधार पर जो जिस उपार्जन की बात, धनोपार्जन की बात हो रही है, तो कितने लोग इस काम में धनोपार्जन को कर सकते हैं। जो उतना ही नहीं तो शिशु रक्षण की कला है, ये जो जिस बेड पर, जिस सैया पर हम सोते हैं, उस सैया को व्यवस्थित सुसज्जित करने की विद्या है। तो इन विद्याओं को, ये जो पारंपरिक विद्या, ये कुछ देखिए 16 प्रकार तो मैंने यही केस के उठन के बनाए इसमें दिए हैं एक उदाहरण के रूप में, कि इतने प्रकार से इसका विन्यास। तो ये एक कला, इसको आप, ये जो केवल उनके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं था, इन कला में पारंगतता पीढ़ी दर पीढ़ी माताएं अपने शिशुओं को सिखा करके उनको प्रशिक्षित कर देती थी। और यदि इन विद्याओं को जो जान लेगा तो आप समझिए हजारों या लाखों व्यक्तियों की तो आय का साधन केवल इस केश विन्यास से हो सकता है। जो छंद की विद्या है, उस छंद की विद्या से कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है उसकी सूची मैंने यहाँ बना रखी है। और बस केवल इसका जो संपादकीय मैंने लिखा है उसके कुछ अंश को आपके समक्ष रखने का मैं प्रयत्न करता हूँ। भारतवर्ष मनन धर्मा मुनियों का ऋणी है, जिनके चिंतन और अनुभवजन्य ज्ञान को प्रकृति के एक एक कण के साथ साहचर्य स्थापित करते हुए उसे भविष्य में संजोग कर दिया है। हम सब भारतवासी इस विश्व मानवता की अनुभवजन्य पारंपरिक सृजनशीलता के ऋणी हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का यह दर्शन हमारा सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान का मूल उत्स भी है। कृषि, वानिकी से लेकर गणित, खनिज, शिल्प, रस, योग, काव्य, चिकित्सा, नृत्य, गीत, संगीत आदि के क्षेत्र में भारत के पारंपरिक विज्ञान विशारदों ने अद्भुत प्रयोग किए हैं। इन प्रयोगों के कारण ही भारत इन विद्याओं का उद्भव स्थल बना है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी राज्य का बोध नहीं होता, संपूर्ण भारत का बोध होता है, समग्रता में भारत का बोध हो रहा है। इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। भारतीय मनुष्यों ने मन की एकाग्रता एवं शरीर के सुचारू संचालन के लिए योग के सदृश एक अद्भुत विद्या दी है। इसके माध्यम से भी आत्मनिर्भर भारत की ओर, यह भी शिक्षा के यदि उसके प्राण तत्व में इसको समा दिया जाए, जो कि सूर्य मनो एक शवाकु आदि के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इतिहास और पुराण, इतिहास पुराणाभ्याम चक्षुर्भ्याम सतकवि
विवेकानंद शुद्धाभ्याम सुप्राप्यर्थी। यहाँ इसमें कहा गया है कि साहित्य संकेत देता है और राष्ट्र के इतिहास को जानने हेतु प्रेरित करता है और पुरातत्व को साक्ष्य देता है। इन दोनों तथ्यों को राजशेखर ने अपने उसमें कहा है। प्राचीन भारत के सरस्वती सैंधव सभ्यता काल से ही प्रतिमा मूर्ति निर्माण से लेकर के विभिन्न स्थापत्य के माध्यम से मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त आदि नरेशों ने, सरपुरीय, पांडवंशी, सोमवंशी, कलचुरी राजवंशों ने इन कलाओं को अभूतपूर्व विकास में योगदान दिया है। अनोरणीयान महतो महियान के सिद्धांत को जैसा वर्णन स्वरूप करने वाला उसके पीछे की जो आधार भूमि है वह वेद विद्या है, और उस वेद विद्या को मैंने बताया। केवल काल गणना को ठीक से समझ लेने का अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है तो वह अपने आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त उसके पास संसाधन मिल सकते हैं, जिसमें कि इस सृष्टि की आयु और ब्रह्मायु और मानव का दिन, इसके दोनों का सारा विशेष वर्णन किया गया है। वर्तमान सृष्टि की जो आयु है वह भी इसी कालगणना पद्धति से जाना जा सकता है। एक उदाहरण संगीत का देना चाहूंगा कि मुसोलिनी के यहाँ पंडित ओंकारनाथ ठाकुर मुसोलिनी के इटली किसी कार्यवशात गए थे किसी कार्यक्रम में। मुसोलिनी को अनिद्रा की बीमारी थी और उनकी एक प्रेमिका जो थी वो बंगाल से बंगवासी थी। उनको पता था कि ओंकारनाथ ठाकुर संगीत के किस प्रकार के विशारद हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको अनिद्रा की बीमारी है। भोजन के टेबल पे ही बैठे हुए उन्होंने राग पूर्विया बजाया और मुसोलिनी वहीं पुरिया धनश्री ऐसे इस राग को बजाया और एक ग्लास में जल लेकर के एक जल तरंग जैसा उत्पन्न किया, और उसको उत्पन्न करने के कारण उस सुनकर उनके संगीत को वो वहीं बेहोश होकर मुसोलिनी नींद में चले गए। और बाद में नींद आने पर उन्होंने कहा कि एक ऐसी विद्या जानता है, उनको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ, आप यहीं रहें, मैं आपको यहीं जागीर देता हूँ। लेकिन ओंकारनाथ ठाकुर ने उसको ठुकराया और फिर से वे अपने मातृभूमि भारत को लौट आए। एक चिकित्सक किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है लखनऊ में, वहाँ असाध्य रोगों का इलाज चलता है। वहाँ असाध्य रोगों के इलाज में वैदिक मंत्रों की संगीतमय प्रस्तुति से थेरेपी दी जा रही है। कोई भी व्यक्ति जाकर के वहाँ इसको देख सकता है कि उन रोगियों के और उसमें दोनों में क्या अंतर है। एक मेजर प्रोजेक्ट में MIT मेरठ में मेरे साथ मिलकर के हो रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जो अध्ययन करते हैं उन पर हमने उनको टारगेट किया है कि जिनको हम योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं, योग की क्रियाओं को कराते हैं, उनके जीवन स्तर में, उनके समझने की क्षमता में और बाकी के जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं उनमें क्या अंतर है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो एक मेजर प्रोजेक्ट DST से चल रहा है और योग का हिस्सा मैं देखता हूँ, बाकी वहाँ के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो उसको देखते हैं। इसी प्रकार से लखनऊ का एक युवक अलग जैसे एक छोटे पौध को सामने के मंत्रों को गिटार पर बजा करके 16 फीट तक उस पालक के पौधों को बनाने में सफलता प्राप्त किया है। ये सभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विद्यार्थियों को हमारे उस पारंपरिक ज्ञान पर भरोसा हो सके कि वाकई आप जाके देख सकते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल में जाकर के आप देख सकते हैं, MIT में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ के विद्यार्थियों की इंजीनियरिंग केवल वहाँ इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इसलिए किया क्योंकि सबसे ज्यादा वही आत्महत्या करते थे प्रोफेशनल, उस फ्रस्ट्रेशन में आकर अवसादग्रस्त होते थे। उनके अवसाद को कम करने के लिए, स्ट्रेस को, तनाव को प्रबंधन करने के लिए वो प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट हम लोगों ने ले रखा है और उसके सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। तो ये कुछ विषय थे जिनके आधार पर हम यह विश्वास कर सकते हैं कि यह जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान है इसमें इतनी क्षमताएं हैं कि वह प्रत्येक हाथों को काम और सैकड़ों हाथों से अर्जन और हजारों हाथों से वितरण की सामर्थ्य दे सकता है। और इन युवाओं को जिस बात के लिए हमेशा चिंता रहती है ज्ञानार्जन करते समय कि हमारी वृत्ति का क्या होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को तो सरकारी वृत्ति या व्यवस्थित वृत्ति नहीं प्राप्त हो सकती है, लेकिन कहीं उससे भी अधिक सम्मान प्राप्त कर सकता है, उससे भी अधिक वह धनार्जन कर सकता है। और ज्ञानार्जन तो उसके लिए जब रहेगा तो वो कहीं ना कहीं प्रत्येक स्तर पे काम करेगा, क्योंकि सरस्वती न कदापि वंद्या भवति, ऐसा हम लोग के गुरु जी कहते थे। और यह विश्वास प्रबल हुआ कि सरस्वती बांझ नहीं होती है। जिस किसी ने भी निष्ठा से, श्रद्धा से इसकी सेवना की है वह थोड़ी सी देर हो सकती है, किसी को जल्दी किसी को कम, लेकिन सफलता प्राप्त होती है। भारतीय ज्ञान की परंपरा की सरणी बहुत विस्तृत है। एक एक विषय पर इतना गंभीर मंथन किया गया है
कि हम उनके पन्नों को भी शायद एक जीवन अपर्याप्त हो जाएगा पलटने के लिए, उसको हम विश्वास करें और शिक्षा में उसको महत्वपूर्ण स्थान दें। इन सूचियों को और विशेष करके जिस कंप्यूटर पर हम लोग और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उसकी प्रशंसा करते हैं, हम नहीं आगाते हैं, उसका भी मूल स्रोत वह संस्कृत भाषा ही है। उसमें जो लिखित ग्रंथ है वही मूल रूप से उसके सूत्र मिलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी। और यह जो बाकस एंड नॉर्थ थ्योरी जो कंप्यूटर का है, बाकस और नॉर्थ 2 जर्मन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको इजाद किया। उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन शर्मनाक, एक दिन वो लज्जा का अनुभव करते हुए यह घोषणा ही करती थी, यह मैंने पाणिनीय अष्टाध्यायी से इन सूत्रों को लिया है। तो बाकस नॉर्थ थ्योरी और पाणिनियन ग्रामर उस दिन से कहलाने लगा, उसके पहले उसका नाम बाकस नॉर्थ थ्योरी ही था। तो इस परंपरा पर करिए और इस ज्ञान परंपरा की जो भारतीयता है उसमें से अगर एक एक कलाओं के लिए भी अगर एक एक विश्वविद्यालय में यदि हम स्पेस क्रिएट कर पाए तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ने लगेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो आत्मा है भारत बोध, और उस भारत बोध के अनुरूप भारतीय शिक्षा, उसके अनुरूप भारतीयों का मन मस्तिष्क तैयार करना वह हो सकेगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। आपने मुझे अवसर दिया, आपने सुना, इसलिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। और समस्याएं आती हैं लेकिन उन समस्याओं से चिंता नहीं करनी है। नदियां प्रवाहित होती रहती हैं, हम उसको रोकते हैं। अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से बात को समाप्त करूंगा। फिर भी नदियां इठलाती हैं, मदमाती इतराती हैं। फिर भी नदियां इठलाती हैं, मदमाती इतराती हैं। अंतस की गहरी पीड़ा सह, अंतस की गहरी पीड़ा सह, सतत प्रवाहित वह रहती है। नमस्कार। बहुत सुंदर एवं प्रेरणात्मक भाषण से आचार्य विजय कुमार कर्ण भाई ने हमें अनुप्रेरित किया। मेरे ख्याल में ये जो संबोधन था आचार्य जी का विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आगे काम में आएगा अगर इसको आचरण करें और उस पर विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ भगिनी अपराजिता पिता जी को अपना वक्तव्य से वो हमें अनुप्रेरित करें। त्रिपुरा विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पूर्वोत्तर ज्ञानोत्सव में आज के इस सत्र के अध्यक्ष महोदय और इस सभागृह में उपस्थित विद्यार्थजनों और छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति, इस विषय में मुझे कुछ यहाँ वक्तव्य रखने के लिए कहा गया है। मैं अगले 20 मिनट तक आप लोगों के साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए कोशिश करूंगी। हम यह सभी जानते हैं शिक्षा के द्वारा ही मानव पूर्णता को प्राप्त करते हैं। स्वस्थ समाज निर्माण के लिए समाज के हर एक व्यक्ति का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण तभी हो सकते हैं जब इस राष्ट्र के सभी व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और ये स्वस्थता तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हमारे प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्र के सर्वांगीण विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है और हम अगले 20 मिनट तक इसी विषय पर जो हमारे परंपरा है या भारतीय ज्ञान परंपरा है, इस ज्ञान परंपरा को किस तरह से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिचय में ही इस विषय से गंभीरता से सोचा विचारा गया है कि
रोजगार और वैश्विक परिस्थिति के तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन के वजह से यह आवश्यक हो गया है कि बच्चों को स्कूल में पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कुछ सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें हर समय कुछ न कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और ये जो नया सीखना, ये इसमें पाठ्य पुस्तक में विषयों को ज्यादा करने के बजाय इस पर अधिक जोर देना चाहिए कि बच्चे अनेक विषयों पर या अधिक से अधिक विषयों पर कुछ सोच सके, कुछ विचार सके। 21वीं शताब्दी के इस पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य देश के विकास के साथ संबंधित है। यह शिक्षा नीति जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित किया गया है, इसमें इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि बच्चों को भारत के परंपरा और संस्कृति से संपूर्ण रूप से रूबरू किया जाए। शिक्षा नीति 2020 में हर एक बच्चे की रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर दिया गया है। भारत ने ये सबसे पहले विश्व को ज्ञान से आलोकित किया गया है। ये हम सभी जानते हैं। वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में मैं कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि यहाँ संस्कृत के पंडित बैठे हुए हैं। फिर भी मैं भारतीय संस्कृति के और उनके जो दर्शन से सारे विश्व जो प्रभावित हुए थे, वो मैं जयशंकर प्रसाद के एक कविता के पंक्ति, भारत महिमा के एक पंक्ति के द्वारा वो मैं उसको रखना चाहूंगी। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैले हुए आलोक, व्युमतम पुंज हुआ तप नस्त अखिल संस्कृति हो। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में संप्री, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे चिराग तब मधुर सांस। प्राचीन काल में ही भारतवर्ष में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, पल्लवी जैसे ऐसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय में विश्व के हर प्रांत के विद्यार्थी आकर यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे और यहाँ के भारतवर्ष के शिक्षकों द्वारा उन विभिन्न प्रांतों से आए हुए छात्रों को विभिन्न विषयों पर ज्ञान दिया जाता। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति ही थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित विभिन्न पंडितों ने वैश्विक स्तर पर गणित, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, भवन निर्माण, नौका निर्माण, दिशा ज्ञान आदि विभिन्न दिशाओं में ज्ञान प्राप्त किए थे। इसमें उस समय में निर्मित बहुत से ऐसे यंत्र है जिसको आज के वैज्ञानिक इसके गुढ़ाट तक नहीं पहुंच पाए। प्रकृति के साथ कोई हाथापाई किए बिना ही उस समय के वैज्ञानिकों ने वो जो आविष्कार इस तरह से करके गए हैं जो आज के वैज्ञानिक इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे भारतीय साहित्य में या भारतीय जो शिक्षा है उसमें ऐसे बहुत सारे विषय वस्तु है जिसका अध्ययन या शोध कार्य करना अभी तक बाकी है। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी तरह कबीरदास ने भी अपने दोहे में कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लारो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को दियो बताए। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि प्राचीन भारत में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान देकर रखा गया है। लेकिन हमारे समाज में धीरे धीरे ऐसा कुछ परिवर्तन आए जिसके कारण आज के समय में शिक्षक एक कर्मचारी, वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के ये जो प्राचीन मान्यता है उसको लाने के लिए सोच विचार रहे हैं। इसके कारण इस नीति
के तहत इस बात पर विचार किया गया है कि समाज के सबसे होनहार व्यक्ति ही शिक्षकता के क्षेत्र में आगे आए या उसमें उसको नियुक्ति मिले, तभी शिक्षक के जो प्राचीन परंपरा है, प्राचीन सम्मान है, उसको वापस दिलाने में नई शिक्षा नीति सफल होगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था व्यवसाय की ओर गतिशील है। इस शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि में समानता दिखाई नहीं देती। नई शिक्षा नीति को समाज के सभी स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस शिक्षा नीति के दौरान हर स्तर के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा। समाज के हर स्तर के व्यक्तियों को ध्यान में रखकर यह शिक्षा नीति बनाया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे प्राचीन जो ज्ञान परंपरा है, इसमें प्रेम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। मानव प्रेम हो या प्रेम को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जायसी के एक बात को हम यहाँ ले सकते हैं, मानस प्रेम भय वैकुंठी नहीं तो कहा चार की मुठी। कबीरदास ने भी इस विषय में कहा है, उठी पली पली जग मुआ पंडित हुए ना कोई, अक्सर प्रेम सो हुए सो पंडित कोई। इसका मतलब यही है कि प्रेम के द्वारा ही हम असली शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेज भारतवर्ष में आने के पश्चात जिस शिक्षा नीति को भारतवर्ष में लागू किया गया, इस शिक्षा से शिक्षित विद्यार्थी धीरे धीरे यंत्र में तब्दील हो गए। उनके हृदय में रहे जो प्रेम है, मनुष्य के प्रति जो प्रेम या प्राणियों के प्रति जो प्रेम है, वो खत्म होते गए और हर एक मनुष्य एक मशीन के रूप में तब्दील हो गए थे। नई शिक्षा नीति में इसी को परिवर्तन के लिए प्रयास किया जाएगा या प्रयास किया जा रहा है। जिस देश की युवा पीढ़ी अपने देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जागरूक है और अपनी कला, भाषा और परंपरा को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, उस देश की उन्नति निश्चित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस विषय पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारत की अतीत ज्ञान परंपरा के महत्व मिले। प्राचीन ज्ञान से जिस देश के सारे विश्व को ज्ञान के ज्योति से आलोकित किया गया, वही उसी देश में उस ज्ञान का कोई कदर नहीं। भारतीय लोगों ने ये जो हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा है, इसको पुराने कपड़े की तरह फेंक दिया। इसको फिर से हमारे शिक्षा व्यवस्था में लाने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया जा रहा है। अच्छे इंसान का विकास करना ही इस नीति का आधारभूत सिद्धांत है। इस नीति के द्वारा शिक्षित व्यक्ति तर्क संगत तरीके से कार्य और विचार करने में सक्षम होंगे, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य आधार होंगे। इस नीति का मूल उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो अपने संविधान का पालन करके एक सुंदर स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सक्षम हो। भारतवर्ष अति प्राचीन काल से एक अत्यंत उन्नत देश है। इस बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। भाषा और संस्कृति का एक समृद्ध भंडार इस भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में मौजूद है। यह देश कला, साहित्य, रीति रिवाज, परंपरा, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक इस सभी दृष्टि से विश्व में अद्वितीय है। इसी कारण विश्व के हर एक प्रांत के लोग भारतवर्ष के साथ किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। नई शिक्षा नीति में इस सांस्कृतिक धरोहर को हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है। एक भाषा के मर जाने का मतलब है उस एक विशाल संस्कृति का मर जाना। संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 500 भाषाएं प्रचलित थी, लेकिन
अगले 50 वर्षों में, ये बीते जो 50 वर्ष है, इस 50 वर्षों में 200 ऐसी भाषा है जो मृत्यु की कगार पर पहुंच गई है। इसका मूल कारण यही है कि ये जो मृत्यु की कगार पहुंचती हुई जो भाषा है, ये भाषा है ऐसे भाषा है जो मौखिक रूप में प्रचलित थी, या इसके बोलने वालों की संख्या कम थी, या इस तरह के अनेक कारण हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तरह की व्यवस्था की गई है जो संख्यक लोग जिस बोली को या जिस भाषा को बोलते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने की जो या रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था है, इसमें रखने की बात की गई है। भाषा के जो हमारे आठवीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हैं, वो भाषाएं भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। इन्हीं सब भाषाई समस्याओं के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए गंभीर रूप से चिंतन मनन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे अपने मातृभाषा से अपने विषय को अच्छी तरह समझ पाते हैं और बहुत आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन वो बच्चा जब स्कूल जाकर एक विदेशी भाषा में शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो उनके ग्रहण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति में एक रुकावट आ जाती है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुठारी जी के एक मंतव्य में यहाँ लेना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा है, जब एक बच्चा स्कूल जाकर दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके दिमाग का आधा हिस्सा उस विषय को अनुवाद करने में लगा देते हैं, तो फलस्वरूप उसकी शिक्षण प्रक्रिया में धीमीपन आ जाती है। इसी कारण एक बच्चा को कम से कम जो आरंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में देने की प्रयत्न करनी चाहिए, और नई शिक्षा नीति में इसी बात के ऊपर बहुत अधिक गुरुत्व दिया गया है। दुनिया के कोई विकसित देशों में अपने ही भाषा द्वारा शिक्षा दिलाया जाता है। ऐसे देशों में अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक महत्व दिया गया है। भारत की भाषाएं अत्यंत समृद्धिशाली वैज्ञानिक होने के बावजूद भी हम एक विदेशी भाषाओं के द्वारा ही या विदेशी भाषा को ही महत्व देकर हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भारत के युवा पीढ़ी राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भारत की इस राष्ट्रीय पहचान और धरोहर के प्रति जागरूक होने के जो समय है वो आ चुकी है। इस क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रखा गया है जिसके द्वारा हम भारत के एक क्षेत्र के लोग या एक भाषा क्षेत्र के लोग दूसरे भाषा क्षेत्र के जो लोगों से या उसके संस्कृति को हम जान पाए, और हमारे इस शिक्षा नीति में यह भी प्रयास किया गया है इस शिक्षा के द्वारा जो राष्ट्रीय चेतना है विद्यार्थियों के हृदय में या विद्या ग्रहण करने के बाद एक युवकों के मन में या हृदय में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। इसका एक उदाहरण में हमारे इतिहास से लेना चाहूंगी। गुप्त युग के बारे में मैं कहना चाहूंगी। चाणक्य ने तक्षशिला में वो जब चंद्रगुप्त उसके एक छात्र है चंद्रगुप्त उसको पढ़ाए थे, तब उन्होंने उनके जो चंद्रगुप्त के मन में जो राष्ट्रीय चेतना है या उनके जो छात्र है उनके मन में जो राष्ट्रीय चेतना है उसको वो पहचान पाए थे, और जो अत्याचारी नंद वंश है उस नंद वंश को समाप्त करके गुप्त साम्राज्य के नींव रखी थी। तो ये इस तरह के जो उदाहरण है या ये जो ऐतिहासिक घटना है, इस ऐतिहासिक घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से पहले जैसे प्रसाद ने इस ऐसे ऐतिहासिक घटना को लेकर उन्होंने चंद्रगुप्त नाम का रचना की थी ताकि हमारे हृदय में, भारतीय लोगों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। और राष्ट्रीय ये जो हमारे नई शिक्षा नीति है इसमें इस तरह के बातों पर अत्यधिक जोर दिया गया है। भारत में जल्द ही इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन निर्माण की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसमें बहुभाषाभाषी ये जो भारत वर्ष है, इस भारत वर्ष के विभिन्न बहुभाषाभाषी लोगों को
यहाँ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ताकि ये लोग अपने भाषा में रहे जो साहित्य है उस साहित्य को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर पाएंगे। और हमारे जो बहुभाषी क्षेत्र के जो लोग हैं, ये भारतवर्ष के लोग अन्य भाषा के साहित्य को अनुवाद के द्वारा पढ़ पाएंगे। इसमें मैं एक असम के उदाहरण देना चाहूंगी। असम के इतिहास को अगर हम तो देखें तो पाएंगे कि महाभारत काल या इससे पहले से ही आर्य संस्कृतियों के साथ, आर्यवासियों के साथ असम प्रांत के एक बहुत ही मधुर संपर्क रहा है। कुछ विद्वानों के या कुछ प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आदिकालीन कवि सरलपाल और अनेक सिद्धों का संबंध असम प्रांत से या प्रांत से रहा। यह बात भी और एक महत्वपूर्ण बात है कि 13वीं शताब्दी में लिखी गई जो माधव कंगली की रामायण है, ये रामायण आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में अनुदित पहली वाल्मीकि रामायण के पहले अनुवाद है। तो इतनी महत्वपूर्ण एक क्षेत्र असम प्रांत है। और अगर मैं इससे और एक दो उदाहरण देना चाहूंगी, भक्तिकालीन असम के प्रमुख कवि श्रीमंत शंकरदेव के बाद में यहाँ लेना चाहूंगी कि उन्होंने अपने जीवन के में कई बार वो तीर्थ यात्रा किए थे। इस तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने असम के संस्कृति को, असम के साहित्य को भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के लोगों के सामने रखने के लिए या उन लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया था। तो इसी भी श्रीमंत शंकरदेव के और एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो है ब्रजावली भाषा के निर्माण। ये जो ब्रजावली भाषा है, ये इस ब्रजावली भाषा में ब्रज, अवधी, ब्रज, मैथिली और असमिया भाषा के द्वारा या मिश्रण से ये भाषा निर्माण की गई थी। और शंकरदेव के समस्त गीत और नाटक इसी ब्रजावली भाषा में रचना की गई थी, ताकि हिंदी जानने वाले जो लोग हैं वो ब्रजावली भाषा में रचित असमिया साहित्य को बहुत आसानी से समझ पाए। तो अब ये जो है, अगर हिंदी जानने वाले लोग अगर ये विद्यावती को समझ पाते हैं, तो शंकरदेव के इस रचनाओं को, ब्रजावली भाषा में रचित रचनाओं को लिप्यांतरण कर दे तो आसानी से हिंदी जानने वाले इस शंकरदेव के जो साहित्य है उस साहित्य को समझने में सफल होंगे। तो ये सिर्फ आसाम के साथ नहीं, पूरे भारतवर्ष के विभिन्न भाषा को, साहित्य को अगर हिंदी में या अन्य भाषा में अनुवाद कर दिया जाए तो हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। अंत में अतुल कुठारी भाई साहब के एक वक्तव्य से ही मैं अपना ये जो भाषण ये समाप्त करना चाहूंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्र के पुनरुत्थान की नींव रखी गई। इस नीति के सुचारू एवं समग्रता से क्रियान्वयन द्वारा देश की शिक्षा बदलेगी। जब शिक्षा बदलेगी तो इस परिवर्तन का सकारात्मक समग्र असर देश पर पड़ेगा। इससे देश बदलेगा, यानी समृद्ध, समर्थ एवं शक्तिशाली भारत के निर्माण में हम अग्रसर हो सकेंगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और त्रिपुरा विश्वविद्यालय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भारत नेता महोदय को मैं अनेक धन्यवाद देता हूँ। अपने ज्ञानपूर्ण और प्रेरणात्मक भाषण से अनुग्रहित किए। में अभी ये जो सत्र है, टेक्निकल सत्र, यहीं पर आज के इस व्याख्यान के उपरांत कोई जिज्ञासा हो तो ऑडियंस से प्रश्न हो सकता है और हमारे विचारक चिंतक जो है उत्तर देंगे। बच्चों में कोई जिज्ञासा है? भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जो व्याख्यान हुई है उस पर किसका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
देकर हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। सर आपकी आज्ञा से सत्र की समाप्ति होगी, उससे पहले एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ। आज का सत्र रहा भारतीय ज्ञान और शिक्षा नीति, वास्तव में सर आपका जो उद्बोधन रहा, जिसके माध्यम से आपने यह सही कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह भारत की आत्मा को पहचानने और खोजने का एक जरिया है, एक तरीका है। हमेशा से हमारे साथ प्रोफेसर कर्ण सर हमेशा ऐसा वक्तव्य देते हैं, न सिर्फ वक्तव्य देते हैं बल्कि एक संबोधित करने वाला जो वक्तव्य होता है वह आपका रहा सर। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं सर। और हम सभी जानते हैं कि राजा पूज्यते देशे विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो यह आप में अगर यह विद्वता आती है जिसकी खोज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से लाने का प्रयास किया जाता है, तो निश्चय ही जो एक सपना है हम सबों का, जो भारत में विश्वास करते हैं, जिसमें आत्मगौरव है, सर आपने कहा आत्मबोध है कि जो विश्व गुरु की जो परिकल्पना है वास्तव में इसी ज्ञानोत्सव के माध्यम से सामने आएगा। मैडम ने बहुत ही अच्छी बात की, अभी तक शायद पिछले 3 सत्रों से छूटा हुआ था कि जो प्रेम का तत्व है, चूंकि मैडम साहित्य की विद्यार्थी हैं तो निश्चय ही उन्होंने उस चीज को पहचाना कि माँ, और उन्होंने जैसे का उदाहरण दिया, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी ना ही तो कहा छाड़े। तो वह जो प्रेम का तत्व है वह भी जो बच्चों में जो जिस सृजनात्मकता की उन्होंने बात की, रचनात्मकता के विकास की बात की, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति वास्तव में उन बच्चों के भविष्य को लेकर के गढ़ा गया है, रचा गया है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, चूंकि यह जो एक काम था वह पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कुछ मोमेंटों के रूप में हमारे जो मंचस्थ विद्वजन हैं उनको देने के लिए मैं आग्रह करता हूं। हमारे जो डॉक्टर तिमिर त्रिपाठी जी का सर आप मंच पर आए और हमारे आज के इस तकनीकी सत्र के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति को एक प्रतीक चिन्ह के रूप में उनको भेंट करें सर। अब मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर गंगा प्रसाद प्रसाई सर से आग्रह करता हूं कि सर आप मंच पर आएं और हमारे आज के प्रमुख वक्ता के रूप में जो प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण हैं उनको सर प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करें। प्रोफेसर गंगा प्रसाद प्रसाई सर। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र, राज्य संयोजक शिक्षा उत्थान न्यास और विभाग उत्तर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय से यहाँ आए हैं, वक्ता डॉक्टर पारसमिता बोरदोले महोदया का आप प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। प्रोफेसर मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इसी के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस तृतीय तकनीकी सत्र की समाप्ति की घोषणा करता हूं।
इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित लोगों से आग्रह है कि बाहर में एक जलपान की व्यवस्था है, जहाँ कल हम लोग प्रांगण में गए थे, आप सभी वहाँ उपस्थित हों और 10 मिनट के बाद फिर इस सभागार में हम भी मिलते हैं।
proud to stand before you and to chair a session on a subject which is very close to our heart of academic fraternity, which is new education policy. Last 2 years, we have all been putting our heads on thinking and trying to know in and out about Northeast policy, national education policy, and more so with special context of contextualizing it in the Northeast. This is the last technical session before valedictory, and since yesterday, we have been hearing about the principles, about the canons of national education policy. We have also today had a very fruitful session on indigenous knowledge system, how it can be embedded with the national education policy. We could find out the linkage between the heritage in the knowledge system and education, which has almost become a forgotten story. But now this session gives us one step ahead of all those, that is the implementation issue. Very nicely put here. This is the last technical session. We will now talk about how to implement the national education policy in the context of Northeast. Because it is Purvottar Gyanotsav, so my contention would be mostly related to Northeast. Here we have already understood that there are certain very important things which are a total departure from the earlier education policies. Number one is transformational changes. Number two is a change in the curriculum and pedagogy. Number three, the perspective of the education, including the international perspective. And number four, inclusiveness, accessibility, and affordability. If we talk about the transformational changes that is happening or that is going to happen in the Indian education system, and more so in Northeast also, we have two types of transformation. One transformation is institutional transformation, a big institutional transformation that is going to happen. Number two is transformation in the academic curriculum, the outcome of education. So in first transformation of institution, we will see that there is a huge transformation. Earlier, what happened? The affiliation system was predominant in Indian education system. Currently also. If we see that there are almost 50,000 institutions of higher learning, and majority of these institutions are under the affiliation system, which is run by the state universities. By the way, if we see the fund going more towards centrally funded institutions proportionately and lesser towards state universities, whereas the entire educational system is being run by the state universities. Currently, there are 500 odd numbers of state universities, almost equal numbers of little less in the private sector, private universities, and only half a hundred of state central universities. So the entire ecosystem is being led by the state university system. So what is now proposition? How to implement it for the transformation changes of the infrastructure, institutional changes, is to make the affiliated colleges and affiliated institutions a degree granting institutions. You might be knowing that we have research universities now, and we have teaching universities, and we have degree granting institutions. Research universities are mainly focused for research, and teaching universities are mainly focused on teaching, but they also carry the research.
But there are third categories of institutions which are now called constituent college, sometimes called affiliated colleges, are degree granting institutions, mostly focused on granting degrees and only delivering the teaching with little research. Now here is a challenge. The challenge is, and more specifically if you talk about Northeast, Northeast is otherwise also lesser known. There are many places where people even now do not know. There are, in mainstream you will find that if you talk that, if you say that I am from Agartala, sometimes you may be asked, oh Agartala, so it is near Shillong, no? Agartala is Shillong. Sometimes you will be, got the questions like, Shillong is in Assam. Sometimes you will have questions, odd questions like this. Now also it is there. There are ample of thousands of the institutions, affiliated colleges, who will eventually now go for granting degrees. Now tell me, Tripura University is famous in Tripura. Bir Vikram University is also there, we know. But we do not know the name of the affiliated colleges. When he or she will take a degree from there and will go for asking job in a multinational companies, they will give a pause and they will try to see that try to look at the institution. In our colleges, say there is a Rangasahi college in Assam. So who knows about Rangasahi college? I'm sure that many of people of Assam also might be trying to look at where Rangasahi college is. It is in Majuli, though the famous river island that is known by everybody, but there is a college in Majuli called Rangasahi College, people do not know. But if you take a degree from there and you go to the mainstream and ask for a job, first doubt will be whether the college is good, what kind of standard the college is delivering. All these questions will come. So I'm saying that this is the implementation issue, one of the implementation issue, that how we can bring out those colleges to the standard which is being accepted universally by all employers. That is first issue. We have to discuss in this session. What I will do is I'll give some of the issues, and then these issues can be discussed, and there may be some questions, opinion, and feedback from the audience also. It is not that we will only talk and we will finish the session. That is number one. Number two issue, that is transformational changes I'm talking about. And number two, when you are talking about internationalization, then, and also along with that, change in the curriculum, making it inclusive in terms of skill, it does mean that you have to provide the skill to the students. Saying is okay, but for providing skill, we need to have proper skill labs in the colleges. You will feel still some of the colleges are lack of infrastructure, lack of proper furniture even to see, lack of smart classrooms, and somewhere there is a talk about 3D classroom, and we are actually fighting for, maybe some colleges fighting for the furnitures. So in that context, without having a lab, how can you give the skill to the students? That is another challenge. So some concrete solution has to be built up by the agencies, government agencies, funding agencies, so that the level playing field for the institutions be put in place first. Then only this will be allowed to grant the degrees. Otherwise, till then, let it be with the colleges, universities in the affiliation system. We are talking about internationalization. What kind of internationalization? It's very good that our students and our talents should work at international environments so that they can have the exposure in the international level. For that, we have to make our students of international level. So far knowledge is concerned, so far skill is concerned. How can we make them? There is one way, that if invite foreign institution and universities to India so that they can give
the international education in India. That is happening. Already 2 universities has concentrated, and there are a few universities lining up. We understand that by next time, next 1 year, Ivy League from 4 or 5 universities will come and put their campuses in India. That's fine. But that will not be sufficient for the students. Numbering 10 lakh of graduates in India to make them equal of international standard. For them, we have to make our universities of international standard. So what strategies we have to take from now on to make our Tripura University, to make my university, Rajiv Gandhi University of Cooperative Management, of international standard. Maybe eventually, stage by stage, we will get some kind of infrastructure, but the teaching, learning process has to be so foolproof that it can become an international kind of level of knowledge to take on the international students, to compete with the international students. So that is number 3 challenge that we need to talk and discuss. Talking about the inclusiveness. Inclusiveness is another issue, and another important leg is make inclusive. It is not only making inclusive by giving some reservation. That is a raw form of inclusiveness. But making curriculum inclusiveness is important. Complete is important. I have seen yesterday in the evening cultural functions, the students were performing so nicely here, and I found that there is a music department, and this music department students are catering to the spirit of an ecosystem of bringing out their talents apart from the academic degrees, which is required to build in all the irrespective of the discipline, irrespective of the system. So that multidisciplinariness is already there. But the thing is that for that we require again support, faculty support. We require different ecosystem that is to be made coming out of our present cocoon to the broader world. For example, mine is a University of Cooperative Management, but we provide MBA, MCOM, LLB, MCA, all this type of thing. But we do not provide humanities degree. We do not provide science degree. We do not provide performing arts degree. But now we have to look at, to find out MBA students dancing in a way so that he or she can compete with, other music student also. It's not necessary that every science student is scientist. He might be having a very good sense of dramatic analysis. He or she might be having a good sense of. So it is about bringing out the things. So these are the few things that I have opened up now for our panelists and also to the open house. I would request the open house to put forward certain questions or comments if they would like to, put forward it. They can write it and send me if anything is there. After presentation of our panel members, we will discuss this. With this, I request all panelists to confine their presentation, open up their opening remarks with 5 to 7 minutes so that we can have discussion, and second round also we will have. The first round 5 to 7 minutes. First I will call Dr. Professor Purvottar, Vice Chancellor of B.Vikram University, to put forward his comments. Please. Namaskar to everyone. Respected Chairperson, Professor Purvottar Das, Vice Chancellor, Assam Rajiv Gandhi University and Cooperative Management, Assam. Our esteemed panelist, Professor Hitendra Kumar Misra, Head Department of Hindi, Northeastern Hill University. Invited resource person from different
parts of Northeast India, faculties of Tripura University, my dear students, ladies and gentlemen, it's my great happiness that I have been given second time opportunity to be present with you in the panel discussion on a very important topic. For the last 2 days, this seminar is organized on the very purpose. This Tripura University and Shiksha Sanskriti Utthan Nyas has taken a very strong and dynamic decision that this national education policy should serve the purpose of the humanity, and this can be done when the whole entire process is being implemented softly. The implementation of idea is most important. We create big ideas for the good of the nation, but when the good idea does not go to the people who are needed for that good idea, it becomes the mismatch. And in that way, the university, in collaboration with this Shiksha Sanskriti Utthan Nyas, this venture itself shows a kind of commitment for the society. University is committed for the good of the educational deliverance. But when this Shiksha Sanskriti Utthan has come for this kind of cause, certainly you will be happy to know this national education policy has given a new vista for everyone. It is not only the government institution which can serve the motto of the education, rather it requires the help of the private spheres. This national education policy talks about public-private partnership. Anyone who is important in the society, possessiveness must be taken into of the society. And in that way, Tripura University has come forward to have a dialogue on the implementation of national education policy with this Shiksha Sanskriti Nyas. I think it is itself a great forward approach to give the message of private-public partnership. And in that way, creating a kind of ambience in the university, because we have seen the different universities, the colleges, they are participating in this seminar, and they are the person they are to implement. But creating a kind of, the environment where the challenges every college, every university is facing, the challenges the college have, the idea the national education policy has, and in order to implement this kind of two-dimensional approach, this seminar is in that way very much relevant. Our chairperson has given the direction in 3 important areas. One is the colleges, which are the affiliating institutions of under some universities. They have to upgrade. They have to come forward to be the autonomous. And secondly, he is talking about another dimension, the internationalization, which is another facet of the implementation part. And he says the transformation of the national education policy, this internationalization of the institution is a transformative approach of the national education policy. And third, he is talking about inclusiveness. Besides 3 dimensions the chairperson has said, I will talk about much more, because the kind of problem this Northeast India and particularly Tripura is facing. Since Shiksha Nyas is here, Tripura University, a university which has more than 50 colleges under Tripura University, which is an affiliating institution. When we talk about educational development of Tripura, certainly the university
is somehow or other becomes accountable, because the academic monitoring or academic, the accreditation of the college, somehow or other the university's responsibility is there. The direction of the university for training the syllabus is most important to monitor the academics of the college. And in that way, the role of the university, and particularly under this seminar, we'll talk about how the university can come forward if the education policy in Tripura be implemented in the colleges. Because the challenges we face, I'm also one of the head of the institution where we have 3 colleges, and of course the 2 colleges, the big college, Maharaja Bir Bikram College and Bir Bikram Memorial College, more than 7,000 students. And whatever the subjects the college have, the MBB college has all the subjects. The 20 subjects are taught in the MBB college. And it is the only college which has been the premium college, given deliverance to the society of all the discipline. So the implementation of national education policy in the college in true sense is a great challenge. And when you talk about its roadmap, certainly the roadmap is required. Because unless you create a plan, because the big idea, if it is not made a planning in true sense, the big idea somehow or other will not reach. Many big ideas will be formulated with certain space of time. But the prioritization of the ideas which can be done initially, that can be done initially. And here lies the role of the stakeholder, here lies the role of the university. Which idea should come first? Which idea should be implemented then and there? This prioritization of the idea, many big ideas cannot be implemented just now. But the idea which should be implemented just now, it is the responsibility of the stakeholder. And one of the stakeholders is university, and the rest is Tripura government, and the third is the government of India. Because when you talk about the welfare of the student, when you talk about the deliverance of education for the good of the student, the linkage of the teacher and the taught, that must be established. And through national education policy, the kind of indication that has been given, how the student will be beneficial, because through entire education policy, our product is a student, and this product is going to serve the society. When we talk about development, and we talk about Shiksha ke jariye desh ka utthán, education is the only tool, and this Nyas also talks about education is the only tool for the development of the nation. Who will develop the nation? The stakeholder is a student. If a student is not make a good product in the university and the college, the development of the country is not possible. That have to keep kept in mind. Now the best product must be sellable in the market. If our product is not sold in the market, what I mean to say, when I say the sale of the product, I mean the utility of the student, how the student is viable to meet the challenge of the time. What is the need of the time? When you just analyze the need of the time, our product must serve the purpose of the need of the time. And when we say the need of the time is technology enabled, the setup. Those were the days when the college and the university have a kind of pedagogy, have a kind of teaching learning process when we are very much accustomed to use the board. Now the board is there, board will be there, but the use of IT is another transformative, the phenomenon. This tech-enabled laboratories, tech-enabled classroom is another important and the new dimension. Each and every student, and of course, whatever is needed for making this technology-enabled phenomena in the classroom, in the laboratory, it is the dire need of the society, dire need of the university and the college. And
the classroom at the University Grants Commission talks about, the 40% classes must be covered by the online, because the shortage of faculties in the college, in the university is the common phenomenon. The authorities pressurize, we don't have the college, the department, always give the pressure to the authority. You give the guest teacher, you give the, fill the faculties. Government take a lot of time to give the grant. Governments, the phenomena that is one important thing. But the national education policy has given the way how to cope with the challenges. The online classes, the many good professors, if you look into, who are everywhere in the Oxford or outside India and the best universities in India, their service can be taken by arranging their expertise through the video conferencing, through the classes that you can arrange in your departments with the nominal remuneration. And in that way, the shortage of faculty can be compensated by using the online resources which are available around the world. Sir, I think we'll discuss. This on the opening remarks. So okay, our chairman is talking about the opening remark. So my opening remark is let the college, when you talk about how the college should come forward, one of the important component is the shortage of faculty which every college is facing. This shortage of faculty can be covered by utilizing the resources, the online resources, by bringing professors from other way. And the second important remark that I would like to talk about regarding the strengthening the college is the clustering of the colleges. Wherever there is in every college, there is every possibility that some departments have less faculties and other department has more faculties. So this shortage of faculty can be brought, and the national education policy too talks about, and here lies the road back. Suppose Tripura University in some department, the good department, their service can be taken by the other institution. This collaboration and the clustering, it talks about national education policy, and it does not require too much rock. So this is the second dimension I am talking about. I will not take much time. And the third part I am talking about, when you are talking about internationalization, the internationalization, establishing in the college and the university, the international mindset through course curriculum, that is the second part. And when you talk, Purvottar has nicely pointed out certain other points which are very important, specifically the leadership role that has to be taken by the university or the affiliated colleges. As I said in my initial remark, that the entire gamut of the higher education ecosystem is being run by the affiliating system. In India, more than 50,000 colleges are there, and all are under the affiliating system except a few. So hence, the responsibility of the concerned affiliating universities is very high now in order to handholding and making the roadmap for, especially in the academic front, for the colleges. Apart from that, he has also pointed out on the technology front, how can we embed the technology in our pedagogy and development of curriculum. He has also talked about the online and books, etc. Those are to be also taken care of. But then importantly, the leadership and the other stakeholders' attention towards making the history now on is important. So with this, I would like to request now Professor S.K. Misraji, Nehu Shillong, to give his opening remark. But then looking at the time, as we are going very late, so I don't know whether we'll have much time to discuss or not. I request Professor Misra to make his comment within 5 to 7 minutes so that we can have certain comments and
also to discuss. Please. धन्यवाद सर। इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को बहुत बहुत नमस्कार। Respected dignitaries and dais and off dais, dear and friends who find this discussion through online like YouTube streaming and Facebook Live. पिछले 2 दिनों से हम लोग इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति या कोई भी शिक्षा नीति, कोई भी नीति, उसको लेकर के कभी कभी जब मैं सोचता हूं तो लगता है कि हम सभी जब सड़क से यात्रा करते हैं तो कभी कभी कुछ रेलवे क्रॉसिंग आती है और वहां 3 वर्ड्स लिखे हुए मिलते हैं, रुकिए, देखिए, जाइए। किसी भी नीति को, किसी भी पॉलिसी को लेकर के हम हमसे सोचते हैं तो मेरी धारणा है कि पहले पढ़िए, समझिए और तब उसके नीति का निर्धारण कीजिए। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में जो इस देश में 2020 में लागू की गई, उस नीति की आवश्यकता ही क्या थी? उस नीति को लाने के पीछे हमारे जो नीति नियामक थे, जो लोग थे, उनकी क्या मंशा थी, वो क्यों लाई गई? कई बीच में शब्दों को हम देखते हैं। देश आजादी का महोत्सव मना रहा था। देश 75 वर्ष का हो गया था। तो उस 75 वर्ष के देश में जब हमारी जनसंख्या तो देखा जाए तो यह देश विश्व के बड़े शक्ति का देश है। हमारे देश की लगभग 65% आबादी ऐसी थी जिसकी उम्र 35 साल से कम है, और यह 35 साल की उम्र का आदमी जब देश 100 वर्ष का होगा, जो 25 वर्ष जो आने वाले समय हैं, उस समय में इस देश की युवा शक्ति का किस प्रकार उपयोग किया जाए, किस प्रकार देखा जाए कि देश को कुछ बेहतर मिल पाए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह 25 वर्ष देश का अमृत काल है, और युवा शक्ति को जो जिसे हम प्रायः अब तक जनसंख्या विस्फोट और किन किन शब्दों से इस्तेमाल करते थे, हम एक समस्या के रूप में देखते थे। हमारी सरकार ने एक नई दृष्टि दी, एक नई शक्ति दृष्टि दी कि इसको जो है किस प्रकार देश के उन्नयन में इसका प्रयोग किया जाए। तब उन्हें ऐसा लगा कि शिक्षा एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम इस 35 साल के युवा को
50 साल और 60 साल की उम्र तक जाने में देश के लिए बेहतर ढंग से इस्तेमाल। और एक नई शिक्षा नीति है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें देश की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को ढालने की कोशिश की गई। सर ने बहुत कम समय दिया, 5 से 7 मिनट। हम लोगों ने बचपन में, हमारी उम्र के जो लोग होंगे वो जानते होंगे, हम लोगों ने गांव में बाइस्कोप देखा था। तो जब बाइस्कोप पे हम लोग ऐसे करके झांकते थे तो शुरू होता था कि 3 साल का बच्चा, ये पान खाता बच्चा, ये ताजमहल देखो, ये दुनिया का मेला, ये बंबई का रेला, ये क्या क्या। और सर जब अंत होता था तो खड़खड़ 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 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाता था। मुझे लगता है कि सही बाइस्कोप की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति को लेकर के जो चर्चाएं जो आते हैं वो कुछ ऐसे ही, अगर 5-7 मिनट में कहना हो तो देखो 3 साल का बच्चा, ये रोता हुआ आदमी, ये बूढ़ा सा आदमी, ये बंबई नगरिया करके खत्म करना हो। मैं जब शिक्षा नीति की बात कह रहा हूं, जब शिक्षा नीति की बातें 2 दिनों से चल रही हैं, तो हमें इस शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझना चाहिए कि शिक्षा नीति लाई गई। और हम इस शिक्षा नीति को लेकर के सही सत्र में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसे पूर्वोत्तर के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के संदर्भ में उसको कैसे, उसका प्रयोग करना है, कैसे उसको हम ले चलना आगे, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जो इसके मूलभूत लक्ष्य है, उस लक्ष्य का जो हमारा उद्देश्य है वह कुछ इस प्रकार है कि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। Sir, I am sorry to interrupt. You have to finish it within 2 minutes because we have already. I am very sorry to say that we are not talking about the education objectives, the NEP objectives here. The session is on implementation. So you are since long time you have been in Northeast. So please tell us something, enlighten us the implementational issues. Because since yesterday we have been doing this, and since last 2 years we have been doing this. I am very sorry to say. Please come to the specific point of implementational issues. Okay, sir, I am trying to come on the topic and which you desired. I want to deliver this thing in few minutes only. तो जब हम उसको लेकर के सर जब हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि इसको लेकर के जो उत्तर पूर्व में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी नेशनल पॉलिसी है, उसका जो अगर हम देखें तो क्या उसके तरीके हो सकते हैं। आपने यह कहा कि आप उसको कहें हाउ टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो मैं समझ पाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पुरवत्तर सर ने भी बहुत सारी बातें कही और शायद वो भी बहुत कुछ कहने की स्थिति में थे और उन लोगों के पास ज्यादा इसका अनुभव है और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसके यथार्थ का अनुभव उनके पास। जैसे अगर कहें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पाठ्यक्रम को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग द करिकुलम। और जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम को हम सीधे हम सिलेबस के रूप में कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, हम तमाम चीजों पे सोचना होगा। और when we thinking about the North East India, जब हमें पूर्वोत्तर के बारे में हम बात करते हैं और चर्चा करते हैं तो हमें पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं को भी समझना होगा। अगर हम यहाँ के रीजनल और यहाँ की लोकल नीड्स को नहीं समझते तो शायद इसमें बड़ी बड़ी मुश्किलें होंगी। इसलिए उस पाठ्यक्रम की जो बात मैं कर रहा हूँ उस
सिस्टम को मजबूत करने में यहाँ की आवश्यकताओं को देखते हुए यह जो नीति है और एक सबसे अधिक जो है वो समग्रता और उसके लचीलेपन को अपनाने पे जोर देती है। दूसरी बात मैं कहूं तो मुझे लगता है कि यह शिक्षा इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन लोगों को शिक्षा तक पहुंचाने की या लोगों को तक शिक्षा की पहुंच बनाने की आवश्यकता है। जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है यह जैसे हम अधिक अगर लोगों तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचाया जाए तो यह इस शिक्षा नीति को अधिक प्रासंगिक बनाने में बड़ी मदद करेगा। इसी क्षेत्र की कल हम चर्चा कर रहे थे कि साक्षरता दर और एम्प्लॉयबिलिटी की बात हम लोग कर रहे थे। अभी आपने भी कहा और प्रकाश भी कह रहे थे, तो हमें उस बात को ध्यान रखते हुए उसमें साक्षरता और लोगों को रोजगार के अवसर अधिक मिले इस पे ध्यान देना चाहिए। रिसर्च को बढ़ावा देने की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण वकालत की गई है, कैसे हम रिसर्च को बूस्ट करें। कल एक आंकड़ा आया कि 40,000 रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व किए गए, लेकिन उस 40,000 रिसर्च प्रॉब्लम में से जो समाज के प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग की आवश्यकताओं के प्रॉब्लम्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है या नहीं है, जैसा कहा। फोकस ऑन दैट, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी अनुसंधान करते हैं, वो हमें यहाँ की आवश्यकताओं, यहाँ के समाज, यहाँ के लोगों और साथ में राष्ट्रीयता को भी ध्यान रखते हुए नेशनल इंटीग्रिटी थी इसमें महत्वपूर्ण बंद हो सकती है। इस पर ध्यान देते हुए हमें अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग द टू द वोकेशनल एजुकेशन, vocational education. This is one of the important aspects of the LP 2020. The policy aims to develop a robust vocational system that provides skill-based training and certification to the students. This is particularly important for Northeast region, which has a high potential for tourism and handicrafts. हमें इन चीजों को ध्यान रखते हुए इक्विटी एंड समावेश की शिक्षा, ensuring equity and inclusion in our education, और जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को बात कहूँ तो जो प्रकाश सर ने कहा, मैं भी वैसे ही बात कहूँगा। This is need to promote the infrastructure of the institution. So there is a very much important challenge on the LP 2020. Performance evaluation, in a technology, कहीं भी बदलाव के प्रति जो प्रतिरोध की स्थिति दिखाई देती है, स्टेज टू चेंज, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द कोई साधारण मिलता है कि जो चैलेंजेस हैं, रोड मैप्स हैं, मेरी समझ से यह बात समझ में आई। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और सुना।
you so much, Mr. Misra. In fact, I must thank you that you have rightly pointed out certain things, but you could have spent more time on your last slide, which was very important and pertinent to this, this session. Because earlier, most of the time you have, spoken about the objectives and all, but we have already listened a lot of time and there are no changes. It's same thing, principles are same. But implementation issues are very important and innovative. I wish I could have given some more time to you discuss. So you have rightly pointed out one of very important points among others is GER. You talked that GER should be enhanced, and this is a challenge. See, now we have GER of 27.1% right now, maybe 0.01 or 0.2% here and there, and we are targeting 50% by 2035. So this is a huge gap. And this is challenge before us, and there are a lot of to do by the universities. And this is more challenged in northeastern region because geographically we are very difficult terrain. Establishing brick and mortar colleges and universities in everywhere and there is very difficult. But students at the same time have to go to several miles to study, which is also difficult financially or otherwise also. So in this moment, at least with these difficulties, how can we achieve from northeastern region, how can we contribute to GER? Probably one of such effort could be open and online education, which can cater to the need of the hour of GER, provided with a caveat to maintain the quality. In the name of giving education, in the name of higher education, if we simply enroll, that will not give much results in future. But then providing the quality education through online mode or through these other modes of the open education and distance education could be one of the important things. Secondly, he has also talked about vocational and skill education, which is very important, which was also talked about by Professor Purvottar, and I also talked about that. This is important, everybody is saying. And under the new education, national education policy, it is said that internship should be the part of all programs. So far, internship was integral part of engineering and management education. But now, it is said that all education programs should have internship. It means thereby you have to build in certain skill and some kind of vocational mindset. Now for being in Northeast, as because I am from Northeast, I foresee there is a huge challenge for us, education institutions. So many students, thousands of students are there. Where should we send them for internship? We, basically being a professor of management, I find it difficult to put my all MBA students for internship year by year, because there are a lot of management students these days. They are targeting the few numbers, handful of the corporates working in northeastern region. But if now you have to give it for all programs, how many students will come out? Think over. Where internship will be given? Think over. How many corporate offices are there in northeastern region, in Tripura itself? How many companies, corporates are there to accommodate all students for internship? So that's a great challenge. How can we diversify the internship? Of course, there are some methods that say political science students or sociology students need not go to the corporates all the time. Political science students may go to the Jila Parishad to do internship, maybe in Panchayat. They can go and look at how Panchayat works. They can also be put in, say, in assembly, how to observe how the assembly functions, how the elections functions, etc., etc. Sociology persons may go to some NGOs to function, to see the functions, how NGO programs are implemented, and economic students also can go to the local Reserve Bank of India office, or maybe to the finance department of the government to see how budgeting is done. So there are ample of ways, but this is a challenge. It is not ready with us. So now we have to innovate those ideas, that how can we disperse our students
throughout different organizations, throughout different societal sects. So then there may be, say, for example, women, say, literature students. Literature, where the literature students will go for internship, they will not go for corporate bodies. So we have to find out ways and means in that way. So innovation in everywhere is the order of the day. There is another point he has pointed out. We need more discussion on this resistance. Resistance to change. This is a basic instinct of the people, that we are change averse, we are risk averse. Now this attitude has to be changed. This has been seen more in northeastern regions, that people are not open to outside regions. They do not want to go out. They do not want to expose themselves. They just are happy, complacent. थोड़ा सा मिल जाए तो बस खुशी खुशी रहना, ज्यादा एक्सप्लोर करना नहीं चाहता है. So these are some of the problems that we have to change the mindset of the students, that we are not less of anybody, but we want us to progress. So with this, I would like to spend 1 or 2 minutes on some questions if you have, otherwise we'll wrap up. If any one of you have any questions or any comments, because I wanted to make it more participative, but since we have come to one, please. If you have mic, you will not have, even take this. If you have mic, do you have one more? Thank you, Mr. What I understand, I just like to raise a point which is pertinent and which is required for every one of us, including the teachers, the principals, and everyone to understand. Now, when we talk about the implementation of NEP, the first thing everyone asks is, we need infrastructure, we need funds, we need this, we need that. I tell you, more than 80-90% of the NEP part you can do in your institution with the help of university of your own. When you ask about infrastructure, who is going to provide that? You have your college. Your college has say 1, 2, 3, 5 programs. You have limited number of students in college. You cannot make it multidisciplinary by asking more and more amount of funds. And what you have to do is, you have to reconsolidate the present infrastructure with all the existing colleges nearby, so that the number of students can also be benefited, as well as don't think that whatever if you for implementation of NEP, if you ask government, I need this much crore rupees, government is not going to give you that, right? You have to consolidate with nearby institutions, make understanding with them, then share pool of resources, pool of teachers, and then only your institution can become a Meru and a multidisciplinary institution. You cannot make your particular institution where you have 300 students multidisciplinary. You make a talk with different colleges through the university, and then you have to make a cluster of colleges, and then pool out resources, pool out infrastructure, pool out students, and then only you can, the real purpose of NEP will be solved. Not asking about infrastructure. So that is what I want to say. All right. Thank you so much. Thank you, sir. This is very much important thing you are want to include in this presentation. Actually, ये एक बड़ी समस्या है कि अगर सभी कॉलेज एक साथ, अगर गवर्नमेंट से सभी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट से अनुदान मांगेंगे, किसी गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि वो देने जा रहा है. Then we can set up cluster of institutions. हम एक संस्थाओं का संकुल, हमें जिले वाइज, हम एक क्षेत्र वाइज जहां 10, 5, 20 कॉलेज हों. और इस दिशा में मैं आपको अवगत कराऊं इस सभा को कि हमारे विश्वविद्यालय में एक मुख्य स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो एस्टैब्लिश किया, जिसमें हम कॉलेजों के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी हमको सुविधाएं देते हैं. कई
बार ऐसा होता है कि हम जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं यूजी लेवल पे और पीजी लेवल पे, हमारे कॉलेजेस कहते हैं मेरे पास टीचर्स नहीं, जैसे कह रहे हैं उस क्लस्टर में किसी के पास टीचर्स हैं तो हम उसको आप कर सकते हैं, बजाओ नहीं। तो विद द हेल्पिंग ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन और हम एक दूसरे की सहायता करते हुए हम चाहे तो एक क्लस्टर वाइज काम करके इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड की बात है उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। Yes, yes, please come. I think Professor Das put correctly, he was touching that issue. Whenever we have to look at implementation is actually difficult. Implementation, as a student of strategic management, we have accepted it and it has been researched that formulation is difficult, but implementation is more difficult than formulation. The strategy has been formulated that we have brought the NEP into existence and 3 years is going to be passed. And the target, if you look at it, they say 50% GR we want to achieve, which is it can be hypothetical imagination. If we talk about 50%, if we look at the past, what Professor Das was talking about, NEP can be only implemented in the country. Particularly, the quantitative target of NEP can be implemented with the help of distance and online education. Because why I say this, not because I am from distance education or online education. I have realized it that we can only give the number, because what Misraji said and others are probably understand. Because there is a limitation. A college can only accommodate 120, maximum 128 students in the class. But I can accommodate 10 lakh students at a time in a year. IGNOU is there, and there are 16 open universities working in the country. And fortunately, KK Handy State Open University is the only state open university in the northeastern part of the country. So we are, I jumped from 12,000 to 41,000 in 6 months. And my target is to make it to 1 lakh. If look at the GR of Assam, it is only 17.4%. And it is the only KK Handy which is going to play a key role in the state of Assam to achieve the GR of existing national GR, and we are working to achieve the national GR at par with the national GR. The most important thing which I wanted to highlight, what Professor Das said, the other day I was shouting in UGC, that we do not do it. What people have a misnomer that, we do not maintain quality. We even cannot introduce a course without thorough checks and breaks by the UGC committees. We go through 6 stages before introducing a course. Only problem is the examination and evaluation. Because without the support of the state universities, central universities, state colleges, central colleges, it's not possible. आप लोग मदद करेंगे तो हम लोग कर लेंगे. We will achieve GR set by the target of GR set by the central government, but your help is required. And the most important thing is UGC 2020 regulation says there is no difference between conventional degree and distance education or online degree. And another important thing for all of you, particularly the students who are sitting here, that if you are doing MCOM, you do MA History or MA Political Science or MCOM or MSc, whatever you want, a dual degree at a time. Oh, it is through us only, through Open University. Whether it is Indira Gandhi National Open University or KK State Open University, it makes no difference. Quality will be different if you want to improve it. Quality is an individual choice always. Every organization is created for quality.
to be qualitative or not, it is always the choice of the individual who is going for it. And above all, time is very short. 35, Thank you, sir. 35 is going to come very fast. So all of us have to work. So students have to work with us. We have to work with them. All the faculty have to work together. Then only implementation is possible. Otherwise, it Thank will you, remain in sir. implementation. Thank you so much. Thank you. Is there any question from student side? Here, young minds are sitting here, please. One student or, are you a student or faculty member? Scholar, very good. Please give. So maybe last question from any students. Okay, you might be needing some clarification. One question from a student side. How and what should be the role of the government or citizens of India in allocation of education, distribution of education, and stabilization of quality of education in Northeast India? No, your question is very diverse. If you are asking what is the role of government, we are not going to tell because we are not from government. Sir, according about citizens, sir. Citizen, what is your duty? That is our duty. As a citizen, we all are having duties. Whom you are asking, what is your duty? He will define or I will define. You are also citizen, I am a citizen. Our all duty citizen, all of the duty of a citizen is defined. And you know your model, your culture will tell you what is your duty. Any specific question on implementation of NEP, if the students wants to know something? From student side, at least one question I want. Please. See, for students' perspective, I would like to ask one question to the house from the chair, saying about cluster very nicely. Mr. has said about the cluster so that we can pool the resources, we can share the resources. But have we thought about the students' side? There's a cluster of university. I am studying physics in a particular college. I want also to study music. But in my college, my campus, that music is not there. That is there in a cluster college which is situated 12 kilometers or 10 kilometers or even 8 kilometers away. Look at the perspective of Northeast. It is not Delhi that all the North Campus colleges are here and there. I can study political science here and I can just go and attend another class of music there. So who has thought about the students? Saying clustering is very important, is easy. But making cluster in the Northeast area. Madam is coming from NIT Arunachal. Ask him where the colleges are situated. Ask her where the colleges are, how many kilometers. Even if the kilometer wise it is less, but the amount of time requires. So that physiological things also has to be seen from the student's perspective. So for Northeast, I am very supporter of the patronage of the government for infrastructure development. From the chair. I don't know about Delhi. I'm not interested to know about Delhi, but I am interested to know about Northeast. Even if you today compare with the infrastructure of the Northeastern universities and the colleges of other advanced states, there is a hell lot of difference. So first, do you know a college is run by 11 section positions? A college run by 11 section positions. 15 section positions, full-fledged college, catering to 2,000 students, catering to 3,000 students. So these are certain basic problems. But now we have seen last few years, suddenly there is a huge development happening in Northeastern region in terms of education and infrastructure, in terms of other infrastructure. So we hope that this gap will be minimized. But so where cluster is concerned, I do not think this is right time to talk about specifically Northeastern region. And I would like to now give a final comment from
Professor Purvottar on the implementational issues, particularly putting emphasis on Northeast. Thank you. My entire idea is if you want to implement the national education policy in college and the university, of course, there are many challenges, but again, I would like to share my views. The challenges will be always there, and how much you can minimize the challenge and you can implement it. And in that way, the national education policy 1 or 2, 3, 4, 5, if you make a prioritization, number one, the 4-year degree, 4-year course you introduce. This is the first and foremost duty of a college. Okay, this framing the course curriculum immediately on the basis of the 4-year. You have to frame the syllabus so that in the course content of 1 year, it should be based on, of course, certificate, 2 years course curriculum, which can serve the purpose for the student. So the entirety of the course in terms of diploma, that should be framed. And the degree level courses and the research-based 4-year courses. So the need of the student must be taken into care by the teachers who will frame the syllabus. Framing the syllabus is not an easy task because that will be to the market. You are going the diploma degree with the scattered knowledge of 1 chapter or 2 chapters, not will do. The subject in a nutshell, but not in detail, that the teacher will have to take care of framing the syllabus. So this is the first task I will like to share. Immediately, each college and the university must frame the syllabus without, losing the time. The second thing, that's very important, and I would like to say to all teachers, just don't hesitate. Because it's most important. Yes. Second thing, the role of that every college and university suffer from the faculties, and this is the dire need of the college and the university. This must be compensated largely by utilizing the resources outside through online or through the collaboration, the collaborative method, and the clustering ways. This is the second. The roadmap must be framed by the college and the university. Third thing that should be taken care immediately, those students who wanted to go outside, the exit and entry option, that should be given priority to each college and university as per the guidelines of the EU. Again, it does not require much. The credit system, when you frame the credit system for the undergraduate and the PG, this is the role of the teachers, the role of the institution. Without losing time, the course curriculum, when you frame the 3 important things that is a big hurdle, this skill-based course, the internship, and the vocational courses. The core paper we always teach. These are the 3 new things that has come up under the national education policy. So again, the college and the university, whatever the available resources we have in and around, again the collaborative from the other institution in terms of meeting the internship as well as the skill-based courses that can be come up. This is the 4th important roadmap each college and university must do without losing the time. It does not require much, the indulgence. Again, the ABC, the academic credit. This is this is the role of the college. The use of the Indian knowledge system. When you frame the of physical science, chemistry, you give the Indian knowledge system as a 1 unit, 2 unit, 3 unit, whatever the idea you have. What is the rate? This should be done without any, this is all the university in the college work. And I think this is the roadmap. And this roadmap should be done without any, losing the time. And 3 years gone, I think we should start soon. And the rest part, again, the 4th year and 5th year, there are many things we can do. But again, let us start immediately whatever we can do. This is my suggestion. Thank you so much. Actually, this subject is so close to our heart and so interesting.
that we forget to honor a time, and we can go on. Actually, we can go on. These are so everybody is interested to now participate. Anyways, as a chair also, there is a humble duty to maintain the time, and organizer is standing there giving indication. So that is why sometimes I have to be little harsh in body language. So that way one should not take it personally. So thank you very much for taking active part, Dr. Purvottar and Dr. Misra, Professor Misra from NEHO and Vice Chancellor. So giving the final thing is that we have pointed out certain thing, that number one, the university concerned has to take the lead on the designing of academic curriculum and redesigning of the whole structure with the affiliating colleges. So they should take the lead, number one. Number two, we have to also contribute very seriously for development of GER, improvement of GER, contributing the online education and also the other mode of distance education. Probably there should be some suggestions to specifically Northeast from I am saying that every state of the Northeast must have an open university. If not, then KKND State Open University of Assam could be a regional open university with the contribution of the governments. So that is one suggestion from this side. Number three, the skill and vocational education. For that, very importantly, all of us should ponder and come together with better, suggestive, practicable, actionable, framework, so that we can incorporate it in the, curriculum in more structured way. So with this, I would like to thank all of you for taking participation, and I'm sorry for lingering for some more time, and I also very sorry for my panelists for not giving the time they want to. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूर्वोत्तर ज्ञानोत्सव के इस दूसरे दिन के चतुर्थ सत्र, जिसका विषय था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की योजना, और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कौशल शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा और इस चतुर्थ सत्र में इसके क्रियान्वयन की योजना को लेकर के हमारे महत्वपूर्ण वक्ताओं ने अध्यक्ष के सानिध्य में इस पर विचार विमर्श किया। और मुझे लगता है कि बहुत कम समय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस चतुर्थ सत्र के विषय क्रियान्वयन की योजना को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक सार्थक चर्चा हुई है। इस चर्चा के बाद और बड़े ही समय का ध्यान रखते हुए इस सत्र को संपन्न किया गया। तो संपन्न की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आज के इस चतुर्थ सत्र के अध्यक्ष के सम्मान के लिए मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान शोध प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजेश्वर कुमार जी से मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि स्मृति चिन्ह द्वारा उनका सम्मान करें। हम चाहेंगे कि आप सब एक बार जोरदार तालियों से आप हमारे इस सत्र के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर देवव्रत दास जी का स्मृति चिन्ह सम्मान और तालियों से भी आप उनको स्वागत उनका अभिनंदन करें। इस कड़ी में सम्मान की कड़ी में जोड़ते हुए आज के हमारे इस सत्र के मुख्य वक्ता हिंदी विभाग पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के सम्मानीय अध्यक्ष प्रोफेसर हितेंद्र कुमार मिश्र सर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास उत्तर पूर्व के संयोजक डॉक्टर तिमिर त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रोफेसर हितेंद्र कुमार मिश्र का स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। इस सम्मान के बाद क्योंकि हमारे दूसरे महत्वपूर्ण योग वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सत्यदेव पोद्दार कुलपति महाराजा वीर विक्रम सिंह विश्वविद्यालय का हमें कल सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम उनका सम्मान हम इसी में ही समझ करके अब इस सत्र आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए इस सत्र का हम समापन करते हैं। और इस
सूचना के साथ कि हमारा जो एक महत्वपूर्ण अंतिम जो समापन सत्र है वो 2:45 से आरंभ होगा। तो आप सभी अभी भोजन के लिए जो त्रिपुरा विश्वविद्यालय का न्यू गेस्ट हाउस है वहां पर आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी आमंत्रित हैं। लेकिन इस विशेष बात के साथ कि आप 2:45 जरूर उपस्थित होंगे, इस उम्मीद और इस आशा के साथ इस सत्र का भी यही समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।